head towards the last panel of today. The panel will look to discover developing student-centric model of teaching in schools, a new age pedagogy. For the same, I would like to invite our moderator, Raymond Fernandes, Chief Academic Officer, Singhania Education Services. A big round of applause for sir. Rajiv Kumar Jhiman, Director, AP International School, Bathinda. Dr. Arul Kumar, Deputy Director, Academics, Stepping Stone Senior Secondary School. Simriti Bhalla, Principal, Delhi World Public School, Moga. A big round of applause for ma'am. Principal, Hillgrove School, Dehradun. Can we have a round of applause for this panel? Over to you, Raymond, sir. We'll try to make it crisp and short and be as pertinent as possible. We've been given the arduous task of looking at child-centric education or a child-centric model. What we will do is, through our discussion and question and answers, we'll try to figure out, does child-centric education really exist? If yes, how so? If not, what can we do to bring it to the fore? And through these discussions, we'll find out what are the ripple effects of child-centric education. With your permission, and if I may start my question with you, sir, is now this child-centric education has been doing its rounds for a very long time. 1986, the NPE at that point in time was talking about autonomy and through innovations and for teachers and students. Do you really feel that our country and our education system is child-centric? I would love to hear your thoughts, sir. Thanks. According to me, our today's education system is not child-centric education system. We are trying to go towards that, but मैं एक बात कहूँगा आपको, बनाने वाले तूने कमी ना की, मगर किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है. बनाने वालों ने काफ़ी कोशिश की है, एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज़ बनाई है, एजुकेशन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे पहले आई है, बट जो मिलना चाहिए, लिसन, टीचर्स आर फॉर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी इज़ फॉर स्टूडेंट्स, coaches are for the students, school is for the students, student is not for these. Fine, but हो कह रहा है स्टूडेंट पे सब कुछ डाल दिया जा रहा है कि ये तेरा करिकुलम है, ये तेरा सिस्टम है, यू हैव टू फॉलो दिस एंड दैट, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू गो थ्रू दिस. अगर ये नहीं करते हो तो आपके जैसे अभी बताया था स्पोर्ट्स पेरेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए. हम ये नहीं पता बच्चा क्या चाहता है. बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए. Why we people are lacking behind other foreign countries? Because our education system is not student-centric education system. हम बच्चे को engage नहीं कर पा रहे हैं, और लॉकडाउन में हम सब स्कूल्स वालों ने ये देखा है, जो भी स्कूल एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद हमारे स्कूल ना होते. 2 साल में काफ़ी स्कूल्स को ताला लग चुका है और बाकी को भी लग जाता अगर टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना होती तो. टेक्नोलॉजी जरूरी है, बट टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है. मतलब वन वे कम्युनिकेशन शुड नॉट बी देयर, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो कोचेज़ का हो, चाहे स्कूल सिस्टम का कि हमारे स्कूल में देश. हमें बच्चे पे सेंट्रलाइज्ड करना है, हमें बच्चे को फोकस करना है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चे में को कहाँ एंगेज कर सकते हैं, उसकी पेस क्या है लर्निंग की. वी हैव टू फोकस ऑन दैट. दिस इज़ माई व्यू. वेरी इंटरेस्टिंग व्यू सर. हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि बच्चे को क्या चाहिए. जब हम बच्चे थे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि हमें क्या चाहिए. हम टीचर बने, हमने जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चों को क्या चाहिए. एंड दैट इज द पर्टिनेंट पॉइंट about child-centric education. Sir, Dr. Arul, if I may then take this question forward to you. We are talking about child-centric education, and sir has very pertinently pointed out student agency. Now, do you really feel, if you look at the definition of student agency, we are looking at the student having a voice and a choice. Do you really feel that we as a country, or we as an education system, are ready for such a big change? Both in our infrastructure, in our thinking, in our teachers, in our resources. Over to you, sir. Good evening, everybody.
before even I start answering this question, are we ready to do it or not? I would like to modify it a bit. Is whether student-centric education is essential, and if yes, to what extent? We have to agree that education, teaching somebody, is such a complex issue. There cannot be one golden solution, right? This is like one of the big problems of the world, right? Not just India, throughout the world. You know, you compete it with problems like pollution around the country, around the globe. Now, there is no doubt that student-centric education would lead to children with independent critical thinking, and it will really enhance their life skills. However, I have a strong belief that this cannot be the only mode of teaching, right? I'll give you an example. If you talk about concepts which are non-intuitive, I'm a person from science, right? So my thought process also goes there. There are so many concepts that we start teaching at class 8th onwards, which are very non-intuitive. I mean, children, if they try to learn it on their own, right, by hands-on, their intuition will lead to wrong answers. One thing, I mean, I should ask everybody, the audience, so if I start rolling something, right, rolling, everybody moves in cars, right? So rolling should be very straightforward. Can somebody tell me if friction is acting when rolling is happening? Is friction fun? Is friction necessary? And when an object starts rolling, is friction playing a role or not? Does anybody know this here? So anyways, friction is important to start rolling motion, but once an object is rolling, friction does not act. This is such a straightforward, I mean, it is an everyday thing. I mean, rolling defines the world, right? Without rolling, you will not have a gear system, you will not have cars, nothing, right? And it is such a non-intuitive concept. Now, if you try to teach this concept from a student-centric point of view, where the student does experiments or does experiential learning, he will come to a wrong conclusion. So, I think that a blended mode of learning should be encouraged, wherein you both have student-centric learning as well as teacher-centric learning, and a lot of effort needs to be put in the lesson plans when, dependent on the course that has to be taught, the time constraints that we have. That's a real practical problem, the time constraints that we have, and the final learning objectives of the content, right? We've been trying to do some student-centric learning in our school, and I believe that not more than 4 or 5 topics are practically viable per subject per year that can be really taught through student-centric learning. But I think that should be enough, because that will develop, the main objective of independent thinkers, critical thinkers, and, having good communication skills, interaction skills. This should be enough for the children to develop those processes and make them learn on their own when they come across. I mean, information today is available all the time, everywhere, right? And once they have these basic things, they can learn. So this whole school system does not need to change. Some of it has to be changed, right? There needs to be moderation. There is, you can't go from one extreme to another. Thank you so much, sir. And I think the pertinent point, the very relevant one that really came across is, while we look at bringing about child-centric education, it should not come as a shock to us. It should trickle in, and we should keep the environment ready for us to bring about child-centric education. I think it's a very wonderful point and very beautifully put. If I can extend that conversation to you, ma'am, is when we are looking at child-centric education, and how sir said, you write lesson plans, and your lesson plans therefore lead into a lot of discussion. Discussion goes into collaboration. Collaboration goes into what the child can do, not only in school, but also at home. Now, when you're having collaboration in class, the class is not as quiet as this place. The class is noisy.
Now, an active, noisy class, is it misconstrued as a disciplinary issue? Or for a child-centric education system, the class is expected to be bubbly and vivacious and full of energy? What are your thoughts, ma'am? Good evening, everyone. I'm Simriti Bhalla, principal of Delhi World Public School, Moga. So this topic is really close to my heart, that is child-centric education. So when he said that it is a noisy class, to be very honest, right from the beginning when I became a teacher also, I always loved a noisy class. I always wanted the interaction to happen. It should be more of students than teacher interaction, because if the students will speak more, the learning will happen. Otherwise, only whatever a teacher wants to put it into the minds of the children will go into their minds, and what exactly the learning atmosphere should be there, it seems to be missing. So coming up to the discipline point, yes, the child-centered education aims at positive discipline. So when we design the rules of discipline in such a classroom, we should not forget about the dignity and the individuality of a child. That should not be, that should never be disrespected. They do hold the same respect as we. We should never, ever try to belittle them. That is my opinion. And for that, I believe, being the leaders, we need to train our teachers. They are the ones who can bring in the positivity in the classroom by boosting up their morale. Not only that, even the parents have to be educated, because somewhere the negativity starts from the home when the parents say that you cannot do anything. So we have to overcome all these things, and we being the leaders have a greater role in educating everybody to have the child-centric education atmosphere. Thank you. Thank you, ma'am. The point that I caught very aptly is that for child-centric education to happen, while we look at collaboration and the discipline issues, and discipline issues should be tackled very differently, child-centric education is not only in school. The home must be actively involved in child-centric education, otherwise the entire system will fail. If home and school are both taken into consideration, ma'am, my next question is to you, ma'am, is how do you see blended education supporting child-centric education? I mean, it's doing its rounds right now. It's pretty much a buzzword. Everybody's talking about blended education, hybrid education, and many more. Do you really see blended education as a very strong tool for child-centric education, or a child-centric model of teaching and learning? Thank you so much for the question, first of all. Good evening to all. Yes, of course, blended education is the only solution, because we cannot go with any kind of rigid thing. Like the other sessions, in the other sessions also it is already mentioned that technology, student, parents are also an integral part of an education system. We cannot hide them, because without parent, there is no education system. Because when the child came to us for the admission, first of all, we see and we picturize the parent figure. कैसे पेरेंट्स आए हैं, अब कैसे पेरेंट्स से मीन्स उनके बैकग्राउंड से नहीं होता है. जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं आज के एरा में, बिकॉज वी ऑल आर पेरेंट्स, हमारे बच्चे हैं सभी के, और हम लोग स्कूल में जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अब बोलते हैं, तो पहले हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये जो एजुकेशन सिस्टम हमसे डिमांड कर रहा है, क्या ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है. आज जो हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मॉडल्स, एग्जैक्टली हमारी जब से पॉलिसीज़ बननी शुरू हुई हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इट इज़ ऑलवेज मैंशनड चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, child-centered education. B.Ed courses, everywhere it is mentioned for the teachers, when teachers are doing B.Ed courses or any diploma courses or any DLED or any course, it is only mentioned child-centered education, child-centered education. But I think or I believe child, parent, school, the management included, whether it is a principal or anybody else,
who is looking after the school, they all three are in a circular form. Like we are studying in economics, that economy cannot be built with only one tool. There are so many tools needed for that. So एक बच्चे को हम बात करते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट. एवरी पेरेंट नीड्स कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का. तो जब तक हम ब्लेंड नहीं करेंगे तब तक हमको ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं मिलेगा. स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक बोथ द थिंग्स आर वेरी मच नीडेड एंड ईच एंड एवरीथिंग इज नीडेड. लाइक टेक्नोलॉजी, अभी इससे पहले मैम ने बोला, सर ने बोला शायद, हाँ, कि टेक्नोलॉजी टीचर को कभी रिमूव नहीं कर पाएगी. इट्स ट्रू. आपने जो ऐप हमें बताया, आपने जो इंट्रोडक्शन हमें दिए, दे आर वेरी गुड of course, but there also a teacher is needed. Without teacher, these things cannot be inculcated in a child behavior or in his or her mind until the teacher will explain the thing. जब एक बच्चा एक स्माइलिंग फेस देखता है मॉर्निंग में और वो जो स्क्रीन पढ़ता है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन ब्लेंड होता है, तो दैट वाज द परफेक्ट ब्लेंडेड emotion and expression and feeling and result output, whatever we are getting in a classroom. So both the things are necessary. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think you've given a very different and interesting take on blended learning. I'm going to take this with me to all the sessions that I go to. Sir, you wanted to add something? I want to add something that I had an experiment in my school last week. तो टीचर्स कह रहे थे बच्चों को मेजरमेंट नहीं समझ आ रहा. तो I planned a fireless cooking competition in the school. I totally arranged a food mela in the school. चार बच्चों का ग्रुप बनाया और उनको बोला गया कि तुम्हें जो कुछ भी बनाना है, you are very free to make, but आप मीडिया आएगा और आपसे पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, क्या क्वांटिटी है, कितना उसका मेजरमेंट है, आपका इवन जो टेबल आप जिस पे हो तो उसकी मेजरमेंट क्या है. एनीथिंग मीडिया कैन आस्क यू. और मीडिया किसको बनाया गया? स्टूडेंट्स में से ही कुछ बच्चों को मीडिया पर्सन्स बना दिया गया. तो जिन बच्चों को जो हम कहते थे पढ़ने में वीक है, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उसके लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया, मैंने वीक से वीक स्टूडेंट से पूछा कि बेटा ये कितना केजी है, इस केजी में कितने ग्राम है, ये कितने ग्राम आपने लिया है, इसको इसका कैसे किया. तो सभी को पता था. ठीक है. टाइमिंग का मैंने पूछा कितने टाइम में आपने एक बनाया, कितना इसको सेकंड्स लगे आपको, बेटा कितने मिनट्स लगे, इसको अगर आलू को आप तुमने घर से उबाल के लेके आए हो तो कितनी देर में तुम्हारा आलू उबला. बिकॉज मतलब इस तरह के बिल्कुल बारीकियाँ क्वेश्चन पूछे. देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्चुअली जो सिस्टम है ना, हमारे सिस्टम में एक थियोरेटिकल बहुत कुछ है वैसे, लेकिन उसमें थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली वी आर लैकिंग. और एनालाइजिंग पावर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पावर है. एनालाइजिंग पावर, परखन शक्ति, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है परखन शक्ति सर्वोत्तम शक्ति. उस परखन शक्ति को तो हम सिखाते ही नहीं है हमारे सिस्टम में कि चीज़ों को परखना कैसे है, सही टाइम पे सही डिसीजन कैसे लेना है. तो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से ही पॉसिबल है. और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा अगर सही वक्त पे, हम भी अपनी लाइफ में, हमारा टोटली लाइफ चेंज हो जाती है एक सही टाइम पे सही डिसीजन ना हो तो. और एक सही टाइम पे सही डिसीजन लाइफ चेंज कर सकता है. तो आई थिंक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो और स्टूडेंट के बेस पे हो कि हर, देखिए बनाने वाले ने हमारा जो अंगूठे का ये थंब इम्प्रेशन भी सेम नहीं बनाया. इट्स यूनिक इन द वर्ल्ड. तो हाउ द यूनिक if thumb impression is unique, but our similar education system we can implement with on everybody. I don't think so. Everybody has a skill, everybody has an attitude, everybody has a talent. We are not schools, we are extraction centers. We are mines from where we can extract coal, we can extract gold, we can extract diamond. Okay, thank you, sir. But this is exactly, sir, the right spirit of child-centric education. Now, आपने जो किया was wonderful. This is an example. हर साल मेरे स्कूल के from 4th standard to 10th standard बच्चे का हमारे भटिंडा में जो पुलिस स्टेशंस हैं, उन पुलिस स्टेशंस को एक लेटर जाता है एसएसपी की तरफ से कि एपी स्कूल के बच्चे आएंगे तो आपको ड्यूटीज़ लगती है बाकायदा थानों में. तो मेरा बच्चा लॉकअप में बैठ के भी देखता है, एफआई रजिस्टर्स भी देखता है, पुलिस
इंस्पेक्टर से एसएचओ से भी बात करता है, आईओ से भी बात करता है, सेम वो हॉस्पिटल्स में भी जाता है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर 5th क्लास का बच्चा ऑपरेट कर लेता है, ठीक है। क्योंकि मेरा अपना ये है कि बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन आनी चाहिए, उसको मुझे कल्ला किताबी कीड़ा नहीं बनाना, मुझे कुरिकुलम के थ्रू ही नहीं जाना, कुरिकुलम नो डाउट आएगा। देखिए लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कुरिकुलम तो बच्चों ने ऑनलाइन भी कर लिया, विदाउट टीचर्स ट्यूशन्स में भी कर लिया, और यूट्यूब ने भी करा दिया, और काफ़ी टेक्नोलॉजी ऐप्स आ रही हैं उनसे भी हो गया। तो हमारा रोल कहाँ है? वी आर स्पोर्टर्स नॉट टीचर्स। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को गाइड करेगा। वी आर गाइड्स, नॉट खाली बोर्ड पे आए और क्लास लगाई और चले गए और बच्चों का टेस्ट ले लिया, हमने डिसाइड कर दिया कि तू नालायक है, तू होशियार है। वी आर नोबडी टू डिसाइड दिस, क्योंकि बनाने वाले ने उसको किस लिए बनाया है वो हमें नहीं पता। हमें किसी को, थॉमस एडिसन को नालायक घोषित कर दिया गया था, पर उसने क्या किया, ये आज हम यहाँ बैठे हैं तो उसी के बदौलत बैठे हैं। लाइट हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उसी देख पा रहे हैं। तो आई थिंक प्रैक्टिकल एजुकेशन शुड बी देयर। हमें बच्चे को मौका देना चाहिए, इंगेज करना चाहिए असाइनमेंट्स में। तो आई एम ट्राइंग दिस इन माई स्कूल लिटिल बिट, जितना हो सकता है। थैंक यू। Fantastic, sir. We know that one size does not fit all, and I think sir has very eloquently explained that one size does not fit all. Sir has also very eloquently explained that teachers cannot be sage on a stage. They have to be guide by the side, and therefore take the if you want to have a child-centric education, you need to change that paradigm and change it very quickly. Ma'am, my question to you, if I can just redirect a question that sir has just brought out, what is the role of the teacher now? How should the teacher modify herself or himself? Sir gave a directive and the teachers followed. If the teachers have to do this on their own, how would they go about doing this? For this, I believe, first of all, the teachers, they need to create a community in the class. And then they have to be a guide, they have to be a facilitator, they have to be available. They have to be available all the time, not only during the school time, maybe beyond that. Because when a student gets stuck in one of the, any query, then it's a teacher, or as said earlier in the previous session, that Google is always there. So someone has to be there, because Google has more or less become a teacher for them, and we, the physical teachers, certainly have to be upgraded to help them out. And this will only happen if we will keep upgrading ourselves, and if we are flexible enough to motivate our children with the positive words. Thank you so much. So if I can redirect a question to you. One point that was brought out in the discussion that ma'am just said earlier was technology is there, but technology does not replace. If we want to bring the true value out of a child-centric education, what is the role of technology, or rather what role will technology play to facilitate this for the teachers or for the institution? So basically, the way I see it is to have a student-centric education in our schools, there needs to be some grassroots level change in the way we evaluate the children, right? The fundamental belief behind student-centric education is the child has to be evaluated based on his potential rather than a comparative evaluation between children, right? Evaluations in this country, be it at any level, be it class 10 board examination, class 12th, higher educations, it's always comparative. मतलब हाँ जी मेरे बच्चे के 95% मार्क्स आए हैं, बट अगर वहीं बाकी बच्चों के 99% मार्क्स आ रहे होंगे ना, तो वो 95% का कोई ये तो कम है कंपैरिजन, राइट? I'll give you an example. So I did my master's from Belgium, and over there we had a very different evaluation system. So I'm talking about MTech. So the final examinations in the university was only for 20 marks. It was an open book examination, and we would go to the hall, and the professor would pick a chit. We would pick a chit, and would have 2 questions, 3 questions. And we were allowed to do whatever, right? We would bring our laptops in,
read about the answers, do whatever you want. We want to write something, don't want to write something, don't write anything. The real examination would happen as a one-on-one chat with the professor. He would sit with us for 25 minutes and then assess what we had learned throughout the year. While asking questions, these were technical questions, of course, we were allowed to open our books, to get कि यार ये formula क्या था, ये अच्छा हाँ sir इसका ये parameter ऐसे होता तो ऐसा हो जाएगा. So it was really based on, are we able to understand the content that is available to us, rather than do we know the content, right? Which is very different from the way things happen in this country. So technology as such can help us implement or modernize, modernize is the wrong word, help us implement and evolve our evaluation system, wherein we, instead of going for a more comparative analysis, we can figure out how the child has grown throughout the year, right? We can use AI modeling and their machine learning to understand how the child has grown through the year and has he reached his potential, and therefore evaluate the child. Fantastic. Thank you so much for those thoughts. Now, one question to all of you. If you were the education minister, we can answer it one at a time. If you were the education minister of your state, what is the one thing that you would do to bring about child-centric education? If I will be the education minister, I will focus on the interactive education system, not on the merit-based education system. फाइन, स्टूडेंट की जो चाह है बनना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे एजुकेशन हमें खुद को नहीं पता है. स्टूडेंट बॉन्ड हो जाता है यहाँ पे कि मार्क्स आए हैं, यहाँ पे अप्लाई कर, यहाँ अप्लाई कर. ग्रेजुएशन करने के बाद आप देखिए बच्चे को जाना कहीं है, जाता कहीं. मैं आपको बताता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में डॉक्टर अब्दुल कलाम, आप अगर जाएंगे ना वहाँ पे, उनका इंटरव्यू मेरे ब्रदर ने छोटे इंटरव्यू दिया, तो उसको बाद में वहाँ विजिट कराया. मेरे ब्रदर का क्लियर नहीं हुआ, तो उनको बाद में ये बोला गया कि आइए आपको हम अपना एक हॉल दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने जो फेलियर्स थे उनके फोटो लगा रखे थे, और उसमें सबसे पहली फोटो डॉक्टर अब्दुल कलाम की थी. तो डॉक्टर अब्दुल कलाम वहाँ फेल हुए बिकॉज उसके वो बने नहीं थे. जिस चीज़ के लिए बने थे वो हम सब जानते हैं, ही वॉज अ मिसाइल मैन. फाइन, तो आप किस लिए बने हो आपको पता नहीं है, हमारे स्कूल सिस्टम बताते नहीं है, हमारे कॉलेज सिस्टम बताते नहीं है. टीचर्स आर कमिंग फॉर देयर सैलरीज, फॉर देयर करिकुलम, टू क्लियर द करिकुलम, कि भाई ये पढ़ाना है, ये एग्ज़ाम लेना है. एक और मैं आपको बताता हूँ, आप भी अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा. सैटरडे मेरे स्कूल के अंदर बैग फ्री डे होता है, ठीक है, नो बैग्स आर देयर अलाउड, और किसी बच्चे को ट्यूशन भी अलाउड नहीं है मेरे स्कूल में, ना ही कोई कोचिज अलाउड है. और मेरे स्कूल में एक डीपी है और डीपी नहीं है, लेकिन स्कूल स्टेट लेवल पे अच्छे अवार्ड्स लेता है, ठीक है. जस्ट बिकॉज प्रैक्टिकली मैं बच्चों को बोलता हूँ, बच्चे ये गेम आपने देखनी, हर टीचर को असाइन किया, मैडम आपने ये गेम का थ्योरी प्रैक्टिकल सब आपको पता होना चाहिए. और सैटरडे को आपको डिसाइड करना है कि एक हफ्ता आपके पास है, डिसाइड करिए कि सैटरडे को आप किस चीज़ में बच्चों को एंगेज करने वाले हैं, आप प्रैक्टिकली क्या करवाने वाले हैं, या बच्चों को क्या असाइनमेंट ग्राउंड में देने वाले हैं या क्लासरूम में देने वाले हैं, या आप बच्चे को टीचर बना के उसको यूट्यूब पे उसका कुछ देने वाले हैं. तो बच्चे आज यूट्यूबर सब बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम सब करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ही उनको करा दें, उनका वो जो कीड़ा है वो हम दूर कर दें, और उसमें हम उसको एंगेज कर दें कि बेटा करना है तो ऐसे कर. तो आई थिंक हम उसकी जो चाह है उसको बूस्टअप कर दें, लेकिन एक डायरेक्शन हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे, अपने नॉलेज बेस पे हम दे दें. और आई थिंक डायरेक्शन ही गाइड का काम होता है, टीचर का काम वही होता है. क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को ट्रेनिंग दी, लेकिन सबको धनुष चलाना ही नहीं सिखाया. अर्जुन को धनुष चलाना सिखाया, भीम को गदा चलाना सिखाया, ठीक है, किसी को भाला चलाना सिखाया, बिकॉज जिसमें जो स्किल उनको लगा उसको एनहांस किया, उसको ट्रेनिंग दी उस तरह की. बट हम एक पर्टिकुलर और इसके लिए हमारे टीचर्स को एक इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा खुद के अंदर. और जिसमें हम जितने प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं टीचर्स को उस लेवल पे इंटरेस्ट उनका बनाने के लिए, ठीक है. लेकिन थोड़ा सा अगर टीचर्स को इंटरेस्ट हो जाए, बिकॉज टीचिंग वाइज क्लासरूम स्टडी की बात करें, यूट्यूब देख के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो टीचर से कहीं ना कहीं आगे निकल चुके हैं, वो ज़्यादा अपडेट है हमारे से.
तो हमें उसको थ्योरी नॉलेज है, उसने यूट्यूब से देखा है या ऐप से पढ़ा है, बट हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे उसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व करके, असाइनमेंट्स इन्वॉल्व करके हम उसको बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा तब रियली वो स्टूडेंट सेंट्रिक एप्लीकेशन बन जाएगा बच्चों के लिए जो स्कूल है। ठीक है सर। थैंक यू सर। आई वॉन्ट टू से समथिंग। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो आई एम वेरी प्राउडली से कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनना ही नहीं है। क्वेश्चन इज आप अपने क्वेश्चंस को बीइंग अ लीडर, इफ़ यू आर अ लीडर एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ आर इनसाइड यू, तो देयर इज़ नो नीड टू एनी टैग कि आपको मिनिस्टर बनना है। वॉट आई हैव डन ऑन माई बिहाफ फॉर माई स्टेट, एज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, सर शायद जा चुके हैं, जो बता रहे थे जोशी मठ और रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड के ऊपर के पहाड़ के गाँव के बारे में। वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाती है, या वहाँ के बच्चे आके बोलते हैं कि वो गरीब हैं, उन्हें फ़ीस माफ़ कर दी जाए, या रूरल एरियाज़ जितने भी हैं हिली एरियाज़ के, उन पे काम नहीं हो रहा है। नथिंग इज़ लाइक दैट nowadays. No hilly area is big, we can say that it is poor area or it is not good developed area in technology, because now today अगर आप केदारनाथ में फ़ोन कर सकते हैं तो आप कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड is not that much bad, because I am there from last 15 to 16 years and in the education field only. And what I have observed, I am the youngest leader from my state. I am the youngest entrepreneur who is having my own school also one, and working as a principal also in another school, and I am having my 2 other branches also in the same state. That's not because of कि मुझे उस चीज़ को आता कैसे करना है, मैंने ये सोचा मुझे ये करना है, और ये बिलीफ मुझ में मेरे शायद टीचर्स ने ही डाला होगा। तो विदाउट टीचर्स अगर मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री हो भी जाती और मैं नहीं भी हूँ, तो भी मैंने एक लेटर लिखा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हैं उनको। उसमें एक क्वेश्चन था मेरा, मैंने आदरणीय से स्टार्टिंग नहीं की थी, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने कितनी needs to be reworked in our minds and in our pedagogies. We know that there is a lot of ripple effect if you want to implement true child-centric education, and the ripple effect is seen in terms of assessments, in terms of teacher development, in terms of leadership roles. Strong points that have really come out is that you don't need a designation or a position to instrumentalize a change. You can be the change you want to see in the world, and you can do it from wherever you are. And we thank you for those thoughts. So what is child-centric education? Can we achieve it soon? And if we need to achieve it soon, what do we need to do? Are questions that are still thrown open to all of us. I take this opportunity to thank all the panel members for sharing their thoughts, their vision, and their ideas. I hope some of these thoughts will stay with us, and we will be able to bring about small changes in education for the better. Thank you so much. Thanks a lot, Mr. Raymond, for keeping us so well threaded. Thanks once again. Indeed, ma'am. So can we have a big round of applause for ma'am and sir for deliberating this panel so well. And I hope that you all had your takeaways from this panel. Moving ahead, I would like to invite Krishna Kumar, Manager, Elets Technomedia, to please come on the stage and give token of memento to our panelist. One more reason why we need to be applauded is we kept to time. Exactly. You see? Raymond Fernandes, Chief Academic Officer, Singhania Education Services Limited. A big round of applause for sir. Rajiv Kumar, Director, AP International School, Bathinda. A big round of applause, please. Dr. Arul Kumar, Deputy Director, Academics, Stepping Stone Senior Secondary School, Chandigarh. Can we have a round of applause for sir? Simriti Bhalla, Principal, Delhi World Public School, Moga.
of School, Dehradun. A big round of applause for ma'am for such bold efforts which she is taking in our school and across the state and cities. Can we have a group picture also?